Good morning, everyone. How are you all? I hope you are all well and fine at your home. हमने लास्ट क्लास में फैब्रिक के बारे में बात की थी, वूल के बारे में बात की थी. When people work in the factories, do you think they face any health risk? Or even in a wool factory, do you think कि वर्कर्स जो होते हैं उनके इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज फेस करते हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट? फैक्ट्री में जो होता है, मशीनरीज और केमिकल्स जो यूज़ होते हैं फैक्ट्री में, उसकी वजह से कोई हेल्थ इश्यू आता है? वी कैन सी के कई बार फैक्ट्री केमिकल वाली होती है तो उसमें व्यक्ति जो होता है वो बीमार पड़ जाता है ड्यू टू सम केमिकल. इनहेलेशन में तकलीफ हो रही है, कई दो चीज़ में तकलीफ हो सकती है. In today's class we will discuss the occupational hazards in the wool making industry. जो wool making industry है, फैक्ट्रीज है, उसमें कौन कौन सी तकलीफ आ सकती है, occupational hazards देख रहे हैं. Occupational hazards. Why do your parents ask you to not play around the stove in the kitchen? आपके पेरेंट्स आपको हर बार बोलते कि किचन में स्टव के पास मत रहा करो. वाई? बिकॉज इट कॉजेज हीट और एट द एंड इट इज़ रिस्क और हैजर्ड टू योर हेल्थ एंड वेल बीइंग. आप जो स्टव होता है वो हॉट होता है, वो बर्न, इट विल कॉज फायर, और फायर की वजह से हमारा बॉडी बर्न कर सकता है. So it is risky or hazard to your health and well-being. So what is occupational hazards? Workers employed in certain industry also face certain risk or hazards. This risk can cause disease or injuries. So such health risks are called occupational hazard. So basically occupational hazards क्या होता है कि जो वर्कर होता है कोई इंडस्ट्री में या कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो काम की वजह से वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क फेस करता है, और जो रिस्क होता है उसके हिसाब से उसको डिसीज या इंजरी हो सकती है. सो दैट इज़ बेसिकली ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड. कोई एक रिस्क के फैक्टर से आपको कोई डिसीज या इंजरी होए, आप जो जिस जगह पे काम करते हो, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड. So as they caused by the type of a person, work of a person does or place at which they work. And occupational hazard के type की अगर बात करें वो किस चीज़ से होगा, तो अगर जो पर्सन किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा है उसका काम कोई इस तरीका का होगा जिससे ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स हो सकता है. सो बेसिकली हियर इज़ द इमेज गिवन जिसमें एक बंदा वेल्डिंग कर रहा है. तो मतलब जो वेल्डिंग करता हुआ बंदा होता है उसने मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर का ग्लास पहनता है, उसका स्पेशल आता है वो, क्योंकि वेल्डिंग जो हो करते हैं उसकी वजह से जो स्पार्क होते हैं, दैट इज ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड ऑफ लॉस ऑफ साइट. उसकी वजह से लॉस ऑफ साइट हो सकती है. सो दे यूज सम स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लासेस to save them from losing sight. So the risk could include safety hazards like slip and falls, chemical hazards like exposure to paint, fumes, gas and solvent at the workplace, and biological hazard like exposure to bacteria, virus or fungi. So here are given three risks जो occupational hazards में पाए जाएंगे. एक सेफ्टी हैज़ार्ड्स, सेफ्टी का इश्यू होगा, जैसे स्लिप या पर आप गिर गए या स्लिप हो गए. सेकंड इज जो पेंट, फ्यूम, गैस, जो कोई भी केमिकल एक्सपोजर है उसका केमिकल हैज़ार्ड होगा. एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल हैज़ार्ड जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और फंगी से डिसीज होगा. सो लेट्स सी फॉर सेफ्टी हैज़ार्ड्स. Workers in wool making industry work with heavy machine to process wool.
Some machineries may cause frequent injury, hence they pose a hazard. जो सेफ्टी हैजर्ड वूल इंडस्ट्री में वर्कर्स को होगी, दैट इज कि वो हैवी मशीनरी की वजह से कई बार आपको उस जगह पे चोट आ सकती है. सेकेंड इज केमिकल हैजर्ड. जो wool making process में we need many different types of chemicals. So various chemicals are required for decreasing, disinfectant, bleaching or dyeing the wool fibers. So due to the chemicals for the usage for long time, they cause eyes and skin irritation. जो chemicals होते हैं after we use it for long time, उसमें skin और eye irritation होगा. And the chemicals that are used in wool making industry are for degreasing, disinfectant, bleaching and dyeing the wool fibers. उसी ये 4-5 जगह पे केमिकल यूज होगा वूल मेकिंग फैक्ट्री में. And last is occupational hazards. Spores of bacteria anthrax are present in the wool of contaminated sheet, and if inhaled by workers, these spores can cause a life-threatening disease called sort disease or anthrax. एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स जो वूल में प्रेजेंट होता है. जो शिप थोड़ी वेल मेंटेन ना हो तो उसमें वूल में बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स नाम का. तो अगर वो इनहेल हो जाए उसके बैक्टीरिया, वो हमारे बॉडी में चले जाए तो फिर एक डिसीज हो जाता है जो सॉर्टेड डिसीज या एंथ्रेक्स भी कह सकते हैं. So anthrax generally infects the digestive system and the skin of the person, and the initial symptoms include fever, muscle pain, boils or ulcers on the skin. बेसिकली एंथ्रेक्स जो डिसीज हो रहा है वो क्या करता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनको इन्फेक्ट करता है, एंड देन इट विल अफेक्ट द स्किन ऑफ द पर्सन. और उसके सिम्टम्स फीवर, मसल पेन, बॉयल्स एंड अल्सर्स ऑन द स्किन. So now based on occupational hazard, let's see 3.2, 3.3 and 3.4. Which disease is caused by inhaling the spores of anthrax? Spores of anthrax present in the wool of contaminated sheep. अगर जो बैक्टीरिया एंथ्रेक्स है अगर वो इनहेल कर ले तो कौन सा डिसीज होगा? सॉर्टेड डिसीज. और एंथ्रेक्स is caused by inhaling the spores of anthrax present in the wool of a contaminated sheep. Now second, list 2 measures that workers can take to protect themselves from occupational hazard in wool industry. जो occupational hazard होगा wool industry में उससे protect करने के लिए क्या कर सकते हैं? We have to list 2 measures. और बेसिकली जो सेफ्टी मेजर्स है उसमें आप ग्लव्स, मास्क जो आपको उस चीज़ से बचाए, हर्ट होने से बचाए, ऐसा कर सकते हो. फिर केमिकल से बचने के लिए उसके प्रोटेक्टिव गियर आते हैं स्पेशल, वो पहनना चाहिए. और फैक्ट्री के मैनेजर को या ओनर को फ्रीक्वेंटली अपने मशीन्स या सब मशीनरीज ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये चेक करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो पाए. Now last, do you think that any of the occupational hazard in the wool industry listed above could also be hazardous in another industry? Yes, because जो safety hazards है वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो उसमें हो सकता है. सेफ्टी इशू कैन बी हैपेंड इन एनी ऑफ द फैक्ट्री. फिर बायोलॉजिकल हैजर्ड जो होता है वो जिस जगह पे केमिकल का यूसेज ज़्यादा होता है, जैसे मिल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्री, उसमें काऊ जो इन्फेक्टेड होती है उससे भी एंथ्रेक्स होता है.
एंड केमिकल की बात करें अगर, दैट वाज बायोलॉजिकल. इफ नाउ वी टॉक अबाउट द केमिकल, तो फैब्रिक वाली प्रोडक्शन फैक्ट्री हो या हमारी वूल इंडस्ट्री हो, कोई जगह पे केमिकल नहीं यूज़ होता है, वो ऐसी फैक्ट्री ध्यान में नहीं आती है. तो इसीलिए केमिकल सभी जगह पे होता है, तो उसके लिए भी हमको इफ़ेक्ट करता है ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स में केमिकली. So these are the three reasons: safety hazards, biological hazards and chemical hazards. 3.1 list two occupational hazards in wool industry. 3 hazards है: safety hazards, chemical hazard and biological hazard. Safety hazards में operating machineries में cause injury. Chemical hazards में bleaching या कोई डिसइंफेक्टेंट या डाइंग के वक्त पे जो केमिकल्स से हमारे स्किन और आइज में इरिटेशन होता है, दैट इज केमिकल हैज़ार्ड. एंड बायोलॉजिकल में कोई शिप या कोई भी एनिमल जो इन्फेक्टेड है, तो उसके साथ वर्क करके उसके वायरस जो होते हैं, एंथ्रेक्स वायरस, दैट विल go into our body and it will harm the digestive system and the skin, and that will cause sort of disease to the worker who is working with that infected ship, yeah, animal. Let's see now 3.6, which is name a source of animal fiber other than hair. Cocoons of silkworms are used to obtain silk thread, which then produce silk fibers. सो सिल्क फाइबर्स या सिल्क थ्रेड बनने के लिए सिर्फ कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म आर यूज्ड. नेम द सोर्स फॉर द एनिमल फाइबर अदर देन हेयर. तो सिल्कवर्म की अगर बात करें तो सिल्क थ्रेड बनाता है एंड देन इट इज प्रोसेस्ड इनटू सिल्क फाइबर. सो दैट्स इट फॉर 3. प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.5 बाकी है जिसमें स्टोरी लिखनी है. सो यू हैव टू रीड दैट स्टोरी फर्स्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड बेस्ड ऑन दैट लिखनी है. सो आई विल ट्राई टू गेट एनसीईआरटी बुक एंड आई विल इन नेक्स्ट क्लास we will read the story and then find the answers. Do you know कि butterflies कैसे born होते हैं? जो caterpillars होते हैं वो caterpillar that hatch from the eggs and transform into butterfly. और butterfly जैसे like butterfly तो silk moths भी born होते हैं egg में से, and egg hatches to become a caterpillar and which then becomes a pupa in a cocoon. The adult moth then comes out of the cocoon. To make you understand this more in detail, let us watch a video. Hello students, today we will learn about the life cycle of a silk moth. It has 4 stages. Let's learn about each stage in detail. The first stage of its life cycle is when it is an egg. A female silk moth lays about 300 to 400 eggs at a time. The second stage of its life cycle is when it hatches from an egg as a caterpillar known as a larva. The larva becomes fully grown in 3 to 4 weeks. It feeds on mulberry leaves during this stage. After growing fully, the larva starts to spin a cocoon around itself. The cocoon is formed in 3 to 4 days. Cocoons are made with the protein present in the saliva of the larva. The silkworm stays inside the cocoon for 2 to 3 weeks. It transforms into a pupa. This is the third stage of its life. Silk threads are taken from cocoons at this stage. The pupa transforms into an adult moth and breaks out of the cocoon.
This is the final stage of its life cycle. To summarize, the life cycle of a silk moth has four stages. The first stage is when it's just an egg. The second stage is when it hatches into a larva. The third stage is when it has spun a cocoon around itself and transformed into a pupa. In the final stage, it breaks out of the cocoon as an adult moth. Now, based on the video we watched, let us draw the life cycle of a silk moth on the chart. As you already seen in the video, stage 1 होता है जिसमें laying of egg, and in stage 2 जो caterpillar जिसका नाम होता है larva, that is hatched, and फिर वो grown होता है adult में, और फिर stage 3 that is pupa, and उसमें से फिर adult moth बनता है which is butterfly. So ऐसे 4 stages में we have categorized or drawn the life cycle of the silk moth. Now let's see practice question 4.1. Which of the following creates silk? Larva creates the silk. Silk fibers are made up of protein which is present in the saliva. And filling the blanks, stage 1, the adult moth lays egg. After 1 or 2 weeks, the egg hatch and larva or caterpillar emerge, and they spin cocoons around themselves, and after 3 or 4 weeks inside the cocoon, larva enter the next stage which is called pupa, and then after more 2 or 3 weeks it breaks out the cocoon and being an adult moth. Right, then again that adult moth after 3 or 6 days lay the eggs, and again this process is working. So this is the life cycle of silk moth. So we have seen practice question number 1, 2 and 3. So you also write this in your homework and your practice question number 3. So in today's class we saw the concept of life cycle of silk moth and occupational hazard, these two topics. If you have any doubt, please 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 feel free to call me and ask. I hope it is clear till now. Thank you all and have a nice day, and write down the homework and send it to me. Thank you all.